On the outskirts of Jammu, in Jagati Nagrota, lies a beacon of hope and resilience. In the heart of this Kashmiri migrant community, amidst tales of turmoil and displacement, a haven of education has emerged, igniting dreams and aspirations for the future generation. Welcome to the story of the Jagati Government Middle School. The school places significant emphasis on early childhood education, believing that the foundation for a child's future is established during their formative years. It features a dedicated preschool wing that caters to children aged 3 to 6, providing a curriculum focused on their overall well-being and development. Beyond academic excellence, the ethos of the school lies in nurturing holistic development, fostering critical thinking, creativity, and resilience. Through a blend of innovative teaching methodologies and comprehensive extracurricular activities, the school cultivates a well-rounded educational experience. From midday meals fostering camaraderie to prayers echoing unity, every moment is a testament to the holistic education being provided here. The Jagati School is one of our 30 by 30 projects where our emphasis is on early years of education. We believe good all-round education and good nutrition in an aesthetic and safe environment forms a firm foundation for life. Students engage in stage performances, showcasing talents nurtured within these walls. The bright kids of Jagati School are the embodiment of hope and ambition, each harboring dreams that stretch far beyond the confines of their immediate surroundings. These young scholars aspire to break barriers and redefine possibilities. कि IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, कि IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, सिंगर बनना चाहती हूँ, फील्ड मार्शल बनना चाहता हूँ, फिर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं जज बनना चाहती हूँ. Parents of the children in this school are Kashmiri migrants. They have gone through very difficult times in past. They want to give their children a better life, better education, better future. We at the Children's Hope India have decided to give them a helping hand by supporting their local school. यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, इस वजह से ही मैंने 8th में इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं. आज मेरा 8th का रिजल्ट आया, मैं फर्स्ट पोजीशन पे हूँ. मेरी बेटी यहाँ से फर्स्ट से पढ़ी हुई है सारी. मेरी बेटियाँ तो ठीक चल रही हैं. अभी ये 4th में इसने फर्स्ट पोजीशन ली है, इसने 7th में 3rd पोजीशन ली है. इस बच्ची ने भी यहाँ से पढ़ा फर्स्ट से. इस टाइम अब हाई सेकेंडरी पर 11th में एडमिशन हुई है इसकी. चिल्ड्रंस होप इंडिया ने ये शुरू किया हुआ स्कूल, ये एक बहुत बड़ा बोन है हमारी पूरी सोसाइटी के लिए. मिड डे मील में मेनू के अकॉर्डिंग उनको मिड डे मील दिया जाता है. ख्याल रखा जाता है कि उनको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ये सभी मात्रा में उनको मिले. This school is unique in more than one ways, having established a craft center where mothers can earn money by stitching school uniforms, believing in a strong community engagement and tie-up, empowering not just the students but the entire community. इतना सफर हमने उठाया, हम माइग्रेंटों ने बहुत ज्यादा सख्ती, पानी नहीं होता था, वॉशरूम नहीं होता था, कुछ नहीं होता था. इसलिए अब इन्होंने यहाँ पे ये स्कूल खोला है, यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम इनका शुक्रिया करते हैं. अब हमें थोड़ा सा लग रहा है कि हम थोड़ा स्टेबल हो रहे हैं आस्ते आस्ते. From cradle to career, every child's journey finds wings here, soaring towards a brighter